Namaste. Class 8th, subject Hindi L3, unit grammar plural. Students, today we are going to study about the grammar part plural. Plural in Hindi वचन. वचन की परिभाषा. शब्द की जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं. अगेन आई एम रीडिंग माँ. शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं. It means in English the form of the words which has the understanding of one or more is called vachan. In Hindi, in grammar, okay ma? That is vachan. That is in English what we say? That is plural. Now you understand ma? Then the two types of plural is there. One is singular, another one is plural. Singular ekvachan, plural bahuvachan. First we going to study about ekvachan. What is ekvachan? किसे कहते हैं? What is the meaning of ek plural? That is, first we study the plural. Now we going to study about the types of the plural, singular and plural. First ekvachan means singular. I said nama first the definition we going to study. ekvachan संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं. अगेन आई एम रीडिंग माँ. संज्ञा. संज्ञा मीन्स व्हाट? नाउन. नाउन के अदर दैट इज संज्ञा मीन्स नाउन. संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु वन दे डिनोट्स वन होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं. इन इंग्लिश the form of a noun that has knowledge of being a person or an object is called singular. Ekvachan means singular. I said na ma. This is the definition of the singular. That is ekvachan. Example in Hindi जैसे लड़का, लड़की, गाय, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, like that. Okay ma? Now we move to the, you see only one girl, that is singular. Okay. Bahuvachan means plural. What is the meaning of plural? Singular first we study. Now we are going to study about the plural. शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति. In singular we study what we study? एक व्यक्ति. Here we study अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं. एग्जाम्पल लड़के, that we study लड़का. Then singular that is लड़का. Plural means लड़के. गाय, गाये, कपड़े, टोपियाँ, मालाइयाँ, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, खेले. These are bahuvachan. More than one. That is bahuvachan. Again I am reading ma. शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं. In English what we say? The form of a word that has knowledge of more than one person or object is called plural. Again I am reading ma. The form of a word that has knowledge of more than one person or object is called plural. Now you understand ma? Okay. You see so many girls is there. We see only one is that is singular.
Here so many girls is there. That is plural. Okay. एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम. In some words are changes like that gender. சில வார்த்தைகள் சில இடங்களில் மாறும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெண்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, லிங்க்னு படித்தோம் இல்லையா, அது வரையாக மாறும். जब आकारांत के पुल्लिंग शब्द में आ की जहाज पर लगा दिया था. आ, that sound is a means it changes into चूता means चूते. A word will change into a. When a is put in the place of a in the masculine word of masculine. What do you say na in Hindi? A we put means it changes into a. Now we understand ma? Some example for that one is जूता, जूते, that is slipper. दारा, दारे, दारे means stars. लड़का means one boy, लड़के means many boys. Yes we add na, okay. घोड़ा means what? Horse. घोड़े means so many horse. बेटा only one son. बेटे so many son. Now you understand ama this one? Next one. जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया है. आ means that. In that word, even in the female words of आकात, that means a is replaced with that a. In Hindi word is a அப்படின்ற sound வந்துச்சுன்னா it will changes into a. कलम pen, कलमे that is pens. बात बातें, they speak, they speaking. रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें. Okay ma? Then that sound will changes into a. Okay. Next we move to the another one. जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ, first we study a, that is the vowel first letter a. Now we study the second one. If the sound is a means that letter will change into ying, ying. Okay. Kavita, kavitayein. Lata, latayein. Adhyapika, adhyapikayein. That is teacher, teachers. Kanya, kanyayein. Mata, matayein. Now you understand amma? Now, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया है, या that we change into yang, yang. That is Chandra Bindi we have to put. That last letter we add the Chandra Bindi. बिड़िया बिड़ियाएँ, चिड़िया चिड़ियाएँ, डिपिया डिपियाएँ, गुड़िया गुड़ियाएँ, चूहिया चूहियाएँ. That means chidiya means bird, dipiya means that box, gudiya means doll, chuhiya means rat. Okay ma? Up to this you understand ma? Now we move to the last one. जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई का ई, that's a vowel letter, fourth letter. Third and fourth letter what ma? A, E. If the letter E, it will come like this mean, we change into yang. Nadi, nadiyang. That is river, rivers. Nari, nariyang. Lady, ladies. Gati, gatiyang. Tali, taliyang. That means plate, plates. Riti, ritiyang. You understand ma? In this class what we study? What is the meaning of plural? Then two types of plural. Vachan, ekvachan, bahuvachan. You understand ma? In some places it will changes into a, sound will changes into a. Okay? Any doubt means you ask in the Zoom meeting. Okay ma? Dhanyavad.